इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है पूरे गांव का ही। परिवार का क्या कहना है आपकी इस बीमारी के बाद, पता चलने के बाद? बस सब अपने दुखी है धीरे धीरे। He is Satpal, a resident of Bandhwari village, located not too far from the national capital. He was diagnosed with cancer and life took a turn he didn't expect. And he's not the only one. Many of his neighbors have met with a similar fate. Many of them have been diagnosed with cancer or other illnesses, all of which they attribute to a mountain of garbage that stands nearby and the leachate that flows from there towards their village. तो आपको ये लगता है कि जो पानी, गंदा पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और आके पानी में ग्राउंड वाटर में मिल रहा है, उसी वजह से बीमारियां फैल रही हैं? हाँ, ये भी है उसका कारण। इतनी बड़ी बीमारी लगना किसी को, और उसको जो आपको भी महसूस देता है कि उसका कारण कहीं ना कहीं वो कूड़े का पहाड़ है जिससे गंदगी, पानी, आबो हवा खराब हो रही है, वो है। क्या कहना चाहेंगे? इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे थोड़ा जल्दी हटाया जाए और गांव में ये बीमारियां और ना फैले और लोगों को भी परेशानियां ना हो, कि जैसा हमने सहा है और कोई ना सह पाए। Bandhwari is a small village in Gurugram district. Apart from being situated at the foothills of Aravallis hills, it's also recognized from the mountain of dump that is visible from the Faridabad-Gurugram highway as well. I wish I had some technology to make you feel, to make you smell what I'm smelling and feeling right now, standing at this very garbage mountain. This very mountain is near the Bandhwari village, and just imagine your condition if 24/7 you have to smell this waste, you have to deal with this waste. Not only this, the leachate from this very garbage mountain is the main reason to worry. This black water you see on your screens is the most toxic form of water one can witness, and the more worrying thing is this water is mixing up with the groundwater of the nearby villages. See, we are still talking about villages and where people still uses hand pumps and wells to cater to their needs of water. And one very example and one very contrast I can show over here is that these trees which are near this very leachate, you can see this stream of water, these are all dried up. This is what this toxic water do. This takes out life from these plants. And in fact, if you see in the back, the trees are all flushy and green, but the plants which are near this very leachate water, these are all dead. Just imagine a human consuming this water, or a concentrate of this water if it's mixed with the fresh water. And in fact, nature has a very less capacity to filter this water. Once you enter the village, two things are evident. First, anger amongst the locals, and second, the fear of living in such conditions. हम लोगों ने जब तिल तिल करके मरना है, हम लोग नर के जीवन जी रहे हैं यहाँ पे, तिल तिल करके मरना है, तो इससे हम लोग एक सामूहिक मृत्यु की इच्छा की मांग करते हैं, हमें इस चीज़ की परमिशन दी जाए। कूड़ेदान जब से यहाँ पे पड़ा है, बिल्कुल नर के जीवन जी रहे हैं। हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट का गंद झेल रहे हैं। कोर्ट का आदेश को कोई नहीं मानता, वहाँ पे कोई नियम पालन नहीं किए जा रहे, कोई स्प्रे नहीं किया जा रहा। जब तक सरपंची का टाइम होता था तो हमारे ये भाई सरपंच होते थे तो वो कराते रहते थे, स्प्रे कराना, मेडिकल सुविधा। आप देखोगे इतनी बुरी स्मेल आती है, बिल्कुल पानी जो बह बह के सारा बिल्कुल ऐसे। और उन्होंने जानबूझ के क्या काम किया, वो पानी को हमारे गांव के साइड छोड़ दिया, ताकि गांव में बह बह के बिल्कुल आप जाकर देखोगे पानी भरा पड़ा है। उसके बाद में हम लोग कमिश्नर है, डीसी है, ये सबसे मिले हैं, जितने इसके निगम के अधिकारी। लगन जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत से लोगों ने बात करी बीमारियों के बारे में। क्या क्या बीमारियाँ यहाँ के गांव के लोगों को हो रही है? बीमारी तो काफ़ी हो रही है। पहले यहाँ बीमारी नहीं थी, अब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। यहाँ बीमारी बहुत कम थी पहले, अब तो एवरेज बहुत आ रही है। किसी को क्या नाम है कैंसर हो गया, किसी को शुगर हो गया, बीपी की शिकायत नहीं। पहले यहाँ लोग बीमार ही बहुत कम पड़ते थे, शुद्ध खाना था। छोटे बच्चे भी बेकार हो रहे हैं, किसी को शुगर हो रहा, पीलिया हो रहा है। छोटा बच्चा पैदा होता ना, बीमारी लेकर आता है। Despite repeated assurances by municipal officials, nothing has changed. In fact, the situation has gone from bad to worse. भाई उनके लिए परेशानी है, उससे मुझे भी बड़ा खेद है और बहुत दुख है, क्योंकि अब हमारे सराउंडिंग, क्योंकि मैं 55 में रहता हूँ, कई दफ़े तो 55 सेक्टर्स तक भी जो चीज़ उनको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे भी हो रही है। क्योंकि पानी जैसे हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं,
गाँव में तो बेसिकली ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है, शहरों में तो बेसिकली कैनाल वाटर हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें मुझे भी मालूम है और मैं चाहूँगा कि अगर मैं दोबारा बनता हूँ तो इस समस्या को, ऐसा नहीं है कि समस्या को हमने ये, क्योंकि एक पूरे नॉट इंडिया की भी समस्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें काम चल रहे हैं बड़ी तेज़ी से, लोग नई नई रिसर्च लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगले आने वाले 1-2 सालों के अंदर अंदर इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म करने का हमारा प्रयास रहेगा और हो भी जाएगा। Residents of this village say politicians have been largely absent when it comes to addressing this issue, but they are not alone in this fight. From the last 5 years, environmentalists are pushing to make a difference. So the living conditions are unlivable for them. Like if you go to the village, the leachate is almost in their village. The village is about approximately 1 kilometer from the landfill, about 800 meters to a kilometer. If you speak to the villagers there, almost every third house has a cancer patient or has had a cancer patient or has faced a cancer death. So what is really needed and what we have been telling Nagar Nigam for so many years is that they need to do a survey. You know, the first thing to to address the problem is do a survey and verify how many cancer patients are there or how many cancer deaths are happening. CNN News 18 investigated independently too. We tested the water samples from both the village's borewell, which is the source of fresh water in the village, and also from the dumping yard. This is the water sample we have taken from the top side of this very garbage mountain. We'll be taking another sample of the groundwater from the village to compare as to how toxic this water is, and in turn when it reaches the villages, what is the level of toxicity in that water. His water test found toxic substances like lead and cadmium concentrate was seen in the water. In fact, cadmium is 10 times more what it should be, and a slow poison like lead is 120 times more than the permissible limit. ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज से ये सैंपल मीट नहीं हुआ है। हमने स्टैंडर्ड यूज किया है IS 10500-2018। इस स्टैंडर्ड में सैंपल में काफ़ी सारी फाइंडिंग्स सही है जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए मीट नहीं कर रही है। लाइक इसमें कैडमियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो टॉक्सिक एलिमेंट है, कैंसर कॉजिंग है। एक और एलिमेंट इसमें फाइंडिंग हुआ है हमारे पास लेड का। लेड भी आया है जो लिमिट से ज़्यादा है, जो कैंसर कॉजिंग है, टॉक्सिक एलिमेंट है, हेवी मेटल्स के रेंज में आते हैं सारे टेस्ट। इसके अलावा कुछ केमिकल टेस्टिंग जैसे TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड, कैल्शियम, आई थिंक एल्कलिनिटी, इनमें भी सैंपल फेल है। तो ओवरऑल मिला जुला के ये टेस्ट ड्रिंकिंग पर्पज से फेल है और इस पानी को नहीं पीना चाहिए। इसके पीने से कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती है, जस्ट लाइक कैंसर, dysentery or many metabolic disorders. This structure you see behind me is a makeshift dam which has been created by the local authorities here. In fact, the local residents say that this structure, this makeshift dam has been created after putting a lot of pressure on the authorities. And in fact, why it has been made? Just because that there was a discharge of polluted water from the uphill areas to these areas. And in fact, to stop the discharge of the water and to put a stop to that very polluted water, this structure has been made over here. The authorities are well aware about the situation, but a little to almost nothing has been done to address it. Unfortunately, all those in positions of power turn a blind eye. Both the waste mountain and problems for the villagers continue to mount. A report by Yash Goyal with video journalist Rahul Malhotra from Specials Bureau for CNN News 18.